के जवाब नहीं आए, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। चौधरी फारूक अहमद साहब, मिस्टर कमालुद्दीन साहब, मीर गुलाम अली तालपुर साहब, सईद हुसैन तारिक साहब, मिस्टर इरफान अली लगारी साहब, मिस्टर मोहम्मद अनवर साहब, चौधरी शौकत भट्टी साहब, डॉक्टर रमेश कमाल साहब, मिस्टर जुल्फ़िकार बचानी साहब, नवाबजादा शाहजैन बुगटी, मिस्टर मोहम्मद फ़ारूक आज़म मलिक, जाम अब्दुल करीम, मीर आमिर अली ख़ान, मिस्टर मोहम्मद ख़ान, मिस्टर मुजाहिद अली, मिस्टर शाहिद ख़ान, आगा हसन बलोच, मिस रूबीना इरफान, मिस ताशफीन सफदर। As requested for the grant of leave, is leave granted. Saeed Shibli Paraz and Nur Haq Qadri, Federal Minister of Religious Affairs, and has informed that he would not be able to attend the session. जी आइटम नंबर 4 3 को मैं डिफर करता हूँ, मिनिस्टर साहब की रिक्वेस्ट आई है। आइटम नंबर 4 बाबर अवान साहब प्लीज, बाबर अवान साहब प्लीज। Item number 4. जी बाबर अवान साहब प्लीज। Thank you, Mr. Speaker. I beg to lay the Federal Government Medical Teaching Institutes 2020 Order number 12 of 2020 before the National Assembly as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Federal Teaching Institute Ordinance 2020 Ordinance number 12 of the 2010 led. Item number 5, Mr. Farooq Naseem Saab. Babar Awan Saab, please. Item number 5. Thank you, Mr. Speaker. I beg to lay the entire Rape Investigation and Trial Ordinance 2020 Ordinance before the National Assembly as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Anti-Rape Investigation and Trial Ordinance 2020 Ordinance 16 of 2010 led. Item number 6, Introduction of Bills. Mr. Fuad Chaudhry. Mr. Fuad Chaudhry. Babar Awan Saab, please. Item number 6. Mr. Speaker, item number 6, I beg to introduce a bill to provide for the establishment of National Meteorological Institute of Pakistan, the National Meteorological Institute of Pakistan Bill 2021. A bill to provide for the establishment of National Meteorology Institute of Pakistan, the National Meteorology Institute of Pakistan Bill is standing to do. Item number 7. Babar Awan Saab, item number 7. Thank you, Mr. Speaker. I wish to introduce a bill further to amend the Pakistan Ordnance Faculties Board Ordinance 1961, the Pakistan Ordnance Faculties Board Amendment Bill 2021, sir. A bill further to amend the Pakistan Ordnance Factories Board Ordinance 1960, the Pakistan Ordnance Factories Board. G. Item number 8. Item number 8. Item number Babar Awan Saab. Item number 8. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that the bill to provide for the establishment of China-Pakistan Economic Corridor Authority, the China-Pakistan Economic Corridor Authority Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once, sir. Now I put the, देखो अब मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला उसको. Now I put the motion to House. जो बिल पे बोलना चाहते हैं प्लीज वो बिल पे बोले, जो बिल पे बोलना चाहते हैं, जो बिल पे बोलना चाहते हैं जी. नवीद कमर साहब, नवीद कमर साहब, नवीद कमर साहब बिल पे बोले प्लीज. स्पीकर साहब, माजरत के साथ आप जिस तरह से हाउस चला रहे हैं आज, ऑर्डर इन द हाउस ना प्लीज. तो किसी को पता है कि क्या हो रहा है, ना ये हमें ये पता है कि आप महंगाई पे बात करना चाहते हैं, पेट्रोल की कीमत पे बात करना चाहते हैं, बिजली की कीमत पे बात करना चाहते हैं, हमारा प्रिविलेज मोशन आपने जो है रिजर्व की थी रूलिंग, उस पे बात करना चाहते हैं, या आज हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जनरल मोशन है बोलने तो दो ना, उसको तो बोलने दो प्लीज. आखिर में रखा है, 50 बिल पास करने के बाद उसकी बारी आएगी. सर ये तो इस तरह से कैसे हम उस चला सकते हैं. Now I put the motion to the House. आप नहीं बैठेंगे तो मैं फिर इस तरह कर लूंगा. Now I put the motion to the House. It had been moved that the bill to provide for the establishment of China-Pakistan Economic Corridor Authority
the China-Pakistan Economic Corridor Authority Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor of the motion will say aye. All those that say no. I think ayes have it in consequent motion adopted. Clause by clause. Clause 2. Clause 2 to 28. Clause 2 to 28. The question date, clause 2 to 28 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequent clause 2 stands part of the bill. The question date 3. Clause 1. Clause 1 preamble and title. The question date clause 1 preamble and title to stand part of the bill. All those in favor of it, say aye. All those against it say no. I think ayes have it in consequent clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 9. Babar Awar sir, please. Thank you very much, Mr. Speaker. I beg to move that the bill to provide for the establishment of China-Pakistan Economic Corridor Authority, the China-Pakistan Economic Corridor Authority bill be passed forthwith, Mr. Speaker. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for the establishment of China-Pakistan Economic Corridor Authority, the China-Pakistan Economic Corridor Authority bill to be passed. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it and motion is adopted and consequent the bill is passed. Item number 10. Babar Awar sir, please. Item number 10. Thank you very much, Honorable Speaker. I wish to move that the bill to amend the Public-Private Partnership Authority Act 2017, Act 8 of 2017, the Public-Private Partnership Authority Amendment Bill 2020, as is reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once, Mr. Speaker. जी जो इसके ऊपर बोलना चाहते हैं, जो मेंबरान इसके ऊपर बोलना चाहते हैं, जी उसके ऊपर बोलना चाहते हैं, कोई नहीं बोला. Now I put the motion to the House. It has moved that the bill to amend the Public-Private Partnership Authority Act 2017 and 2017, the Public-Private Partnership Authority Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in motion may say aye. Clause by clause reading. The question date 2 to 31 stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequent clause 2 stand part of the bill. Clause 1 preamble is title. The question date clause 1 preamble and title to stand part of the bill. All those in favor of it will say aye. All those that say no. I think ayes have it in consequent clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 11. Babar Saab. Thank you very much, Mr. Speaker. I am moving item number 11. With your permission, I move that the bill to amend the Public-Private Partnership Authority Act 2017, Act Roman 8 of 2017, the Public-Private Partnership Amendment Authority Bill 2020 may kindly be passed forthwith. Thank you. कोई बोलना चाहते हैं इसके ऊपर? इस पे बोलो ना, जाओ तकरीर करो इसके ऊपर. असद साहब तकरीर करो इसके ऊपर ये बिल पे. जी, now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to amend the Public-Private Partnership Authority Act 2017 and the Public-Private Partnership Authority Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor of say aye. All those that say no.
I think ayes have it in the motion is adopted and considered the bill is passed. Item number 12. G. Zain Qureshi. Zain Qureshi Saab. I rise to move that the bill to make provisions for the establishment of Pakistan Single Window, the Pakistan Single Window Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. इस पे कोई बोलना चाहते हैं? नवीद कमर साहब. जी. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to make provision for the establishment of Pakistan Single Window, the Pakistan Single Window Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor say the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question is dated clause 2 to 23. The stand part of the bill. All those in favor say aye. Aye. All those against say no. I think ayes have it in consequence clause 2 stand part of the bill. The 2 to 23 stand part of the bill. Schedule. The question date schedule do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequence schedule stand part of the bill. Clause 1 preamble and title. The question date clause 1 preamble and title to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 13. Zain Qureshi Saab, please. I rise to move that the bill to make provisions for the establishment of Pakistan Single Window, the Pakistan Single Window Bill 2020, be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to make provision for the establishment of Pakistan Single Window, the Pakistan Single Window Bill to be passed. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 14. Zainuddin Babar Saab. Thank you very much, Mr. Speaker. Item number 14. I beg to Mashallah, lay badi awaaz hai aapki. on the table an Ji, authenticated copy of the address of the Parliament of the President of the Islamic Republic of Pakistan, made under Clause 3, Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, before both the houses assembled together on 20th of August 2020, as required by Sub-Rule 1 and Rule 60 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. Thank you. The authenticated copy of the address of the President of the Islamic Republic of Pakistan, made under Clause 3 of Article 56 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, before both houses assembled together on 20 August 2020, as required by the Sub-Rule 1 of Rule 60 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, stand laid. Item number 15. खत्म हो गया ना? 15. जी बाबर अवाल साहब, please. Thank you. It is item number 15. Mr. Speaker, I wish to move the following motion. The House expresses its deep gratitude to the President of Pakistan for his address to both the houses assembled together on 20th August 2020. I move this motion. Who will second the motion of thanks? Any minister or a member can second it. Ji. Huh? Alia Kamran.
जिस तरह से यहाँ की एक MNA की सरकर्दगी के अंदर हमारी एक गैर सियासी खातून के ऊपर कीचड़ उछाला है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये हमें इस्तेकाक कमेटी में लेकर जाया जाए, क्योंकि ये इस हाउस का इस्तेकाक मजरू हुआ है। ये जो MNA साहिबा हैं, क्या ये खातून कहलाने की हकदार है? क्योंकि वो एक गैर सियासी खातून के ऊपर यहाँ पर एक और MNA को डिक्टेट कराते हुए कीचड़ उछालती रही है। और किसके कहने पर कीचड़ उछालती रही है? जो उस पार्टी को की सो कॉल्ड सरबराह है, जो इस वक्त जमानत पर बाहर है, जो इस वक्त करप्ट हैं, जो इस वक्त झूठी है, जो इस वक्त जिन्होंने इस ऐवान को भी कुछ दिन पहले यहाँ पर जितने मुंतखब मेंबर थे उनको यरमगाल बनाकर रखा हुआ था। हम ये कहते हैं कि इन खातून को बुलाकर इसका उनसे कहा जाए कि वो माफी मांगे और आइंदा वो घरेलू खवातीन को, गैर सियासी खवातीन को कभी भी उनके बारे में इस ऐवान पर, जो इस ऐवान में आकर अपने बारे में क्लैरिटी नहीं दे सकती, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। सर, हम PMLN के बारे में तो ये जानते थे, क्योंकि 80 की दिहाई से यही गलाजत, यही मक्कारी और यही इल्जाम तराशी इनकी सियासत का खासा रही है। बेनजीर साहिबा को देख लें, जिस तरह से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई, और अब इसी तरह से जिस तरह हमारी मोहतरम खातून अव्वल और वजीर आजम साहिबा की बहन के ऊपर जिस तरह की ये इल्जाम तराशी करते हैं, हम उसको ना सिर्फ कंडेम करते हैं बल्कि हम ये कहते हैं कि जो सियासत है ये पैगंबरों की मिरास होती थी, लेकिन इन लोगों ने कब्जा माफिया के पीछे उसको रखा हुआ है। इन्होंने ये जो आप देखें, जो माफिया देखें, वहाँ पर छोटे छोटे नवाज शरीफ बैठे हुए हैं। चाहे आप यहाँ पर देखें रस्सागिरों को देखें, वो भी इन्हीं की मुस्लिम लीग का हिस्सा है। चाहे आप कब्जा माफिया को देखें, और ये मैं लेकर आई हूँ इनके सारे करतूत। यहाँ पर सिटिंग MNAs हैं और उन्होंने किस तरह से सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है और किस तरह से वो ना सिर्फ अवाम को बेवकूफ बना रहे बल्कि उन्होंने इस पॉलिटिक्स को भी The House is adjourned to meet again on Tuesday, the 2nd February at 4 p.m.